Pranamata. Shnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirabhishesha Shunyavadi Ashatadishitani Radha Madhava Jai Bihari Jai Radha Madhava Jai Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari गोपी जन यशोदा ब्रज जन रंजन यशोदा ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनिता यमुना तीर वनिता Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Jaya Nityananda Shri Advaita Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Shyam Radha Shyam Radha Shyam Shri Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Baladivasu Jaya Sudarshana Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nora Hari Bol Nitanga Hari Bol Hari Bol Hari
Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna. Aish. Okay. Anushka, Mata, what kind of microphone are you using? Sing No phone, Prabhuji, just phone speaker. phone speaker from your phone, and the video is from the computer or is the phone? It's also the phone. Only one Or in the device, mobile phone. Okay. Can you use the computer for the video or no, not possible? Okay. All right. Next time, we're gonna try to have a microphone that plug into the phone so we can hear better, your nice voice without breaking anything. But it was very beautiful. Thank you, Mata, for the attempt. We are learning, Thank you so much. Okay. That was very beautiful. Thank you. I hope I see you in the future singing. Okay. Now we're going to start. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivrisesa Sunyavadi Paskata Desatanine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Swasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Today, we have here the podcast. Let me see if I can go out. Purifying the heart by taking to the holy name. Okay? Everybody agree? Okay, Kushbo, don't let me run. Okay, so I now I know you have to translate, because we're getting ready to go to India. There's 1,000 million things to do, little things that last minute we have to go get it, whatever. Okay, so today we explore how the holy name purifies the heart, according to the Gaudiya Vaishnava tradition. Okay, so here we say purifies the heart. It says our consciousness, our desires, our intentions, our identity. ओके हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो हृदय है उसे हम शुद्ध करेंगे हरिनाम के उच्चारण से, हरिनाम से। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो वैष्णव जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से हरिनाम कैसे हमारा हृदय को, हमारे चेतना को, हमारे जो विचार है, हमारी जो इच्छा है उसे कैसे प्योर, कैसे शुद्ध करेगा। यस प्रभु जी। Okay. So, what are the impurities? Who can tell me what are the impurities? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता जो होती है, विशुद्धि जो चीजें होती है वो क्या होता है, कोई बताएगा अपना माइक ऑन करके, हैंड रेज करके। What are the impurities? Anybody can say something? चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। प्रभु जी, ईगो, प्राइड, jealousy, anger. Who is speaking? I don't see you here. नेहा, नेहा। नेहा माता जी। Neha, okay, thank you, Neha. Thank you very much. Yes, envy, pride, greed, these all
together they call anarthas, because they take our concentration from the goal, which is a good relationship with Krishna. Prabhuji, Anushka Mataji also wrote something. Oh, Yeah. okay. Cheating Oh, I'm sorry. propensity. I look here, it's over there. I look there, it's over here. Okay. Cheating propensity. That is definitely an anartha. And cheating is many things. We're cheating ourselves by having an idea of we have or we are. We're cheating other people by, take advantage of them. You see? This cheating propensity. ओके, तो अभी प्रभु जी ने पूछा था कि जो अशुद्धता जो होती है हमारे जीवन में वो क्या क्या होती है। तो जवाब में आया है कि जो हमारा प्राइड होता है, जो हमें मतलब थोड़ा सा भी कुछ हम करते हैं तो घमंड आ जाता है, या फिर जलन होती है किसी चीजों से, किसी से हमारे में मतलब ऐसे। अभी प्राइड और ईगो का मैं हिंदी क्या करूँ मुझे नहीं पता, आप समझ जाओगे ये। तो ये सारी चीजें क्या है, अनर्थ होती है, और ये जो अनर्थ होते हैं ये हमारे और कृष्णा के बीच में रुकावट लाते हैं, हमारे रिलेशन बनाने में, हमारे बीच में आ जाते हैं वो। यस प्रभु जी। But we see that in the more modern world, that's not a process to take care of these things, to minimize, to understand, to learn how to work with these things. There's none. Everybody, the young people principally, they don't have anything, no clue how to deal with these things. Actually, they don't even think these things exist, even though they are themselves into anger, lust, greed, all these things. ओके, लेकिन आजकल में जो चल रहा है हमारे इस मॉडर्न जो वर्ल्ड चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये जो सारी जो चीजें बताई थी अनर्थों पे, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता कि इसे हम कैसे ठीक करें या फिर इसे कैसे कम करें। और खास करके जो नौजवान लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए तो ये चीजें मतलब कुछ है ही नहीं है, क्योंकि इन ये चीजों में वो रहते भी है और उस चीजों के ऊपर बिल्कुल कभी ध्यान ही नहीं देते कि जो क्रोध है, हमारा काम क्रोध चीजें है, इस पर वो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनके अंदर ये चीजें रुकावटें भी ला रही है। यस प्रभु जी। Right. We are without Krishna consciousness or the process of yoga that we have in here. People, they're alone, try to figure out, all these emotions in the heart, some of them not so good emotions, like these impurities. They don't even know how to get them out. They don't even know they are there. They think I'm normal like this. I'm envious here. I'm trying to cheat there. They don't think this is life. This is how it is, and I have to get ahead. And I put this guy down so I can get up. And they don't have any idea how to work the process to eradicate those impurities. Somebody's asked the theme of today, purifying the heart by taking to the holy name. Somebody was asked something. Okay, go Mata. यस, तो अभी प्रभु जी ने बताया कि आजकल हम जो देख रहे हैं, और स्पेशली हम जो हमारे भक्ति योग में है, जो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण भावनामृत में, इसमें हमें ये चीज नोटिस कर पाते हैं कि लोग कैसे अकेले में है और वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और वो अपने दिनचर्या में कैसे करते हैं अपने जीवन में इस चीजों को कि एक दूसरे को मतलब चीट करना, और मतलब मुझे आगे जाना, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, दूसरों को रोक कर वो इन सब चीजों में ही वो लगे रहते हैं। यस प्रभु जी, और उन्हें पता भी नहीं कि इन सब चीजों से कैसे बाहर आया जाए। उन्हें बस ये चीज है कि हमें ये सारी चीजों से लड़ के मतलब आगे बढ़ना है, दूसरों को रोक करके बाहर आना, वो चीज उन्हें पता ही नहीं है। यस प्रभु जी। So the first thing when we get into Krishna consciousness in the morning, at least most of the temples, they sing the Shishastika.
that is in the morning, along with other prayers like that. But in the Shishashka, the first verse, Chetoda Paramajanam, it is cleaning, chanting, cleanse the dust accumulate on the mirror of the mind over many lifetimes. You see, so now we have an idea. Yes, these things are there, the dust in the mind, the impurities, and the process to cleaning them is to chant. It's the beginning step. ओके, तो अभी प्रभु जी ने बताया कि हमारे कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं कि हमारे सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम जो टेम्पल में होते हैं उसमें हम सबसे पहले बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं और प्रेयर के साथ में हम शिक्षाष्टकम का भी उच्चारण करते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो श्लोक आता है चेतो दर्पण मार्जनम, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जन्मों जन्मों के जो भी पाप और जो भी दाग और जो भी रह गए हैं उसको वो जो कांच है शीशा जो है उस पर से हम साफ करेंगे। वो कैसे करेंगे? भगवान का हरि नाम जप के। यस प्रभु जी। So, like fire that burns whatever you know it or not, the name purifies whatever you fully understand or not. You see, it has a purifying effect just by your vibration of this vibration, this holy name. It has effect, even we do not fully understand. It's a blessing. ओके, अभी जैसे प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे आग होती है उसकी जो उष्मा होती है वो जो उसकी हमें जला देती है, हम उसमें हाथ डालते हैं, हमें चाहे पता है या नहीं पता है वो जैसे जला ही देती है हमें। ऐसे ही हरिनाम है, हरिनाम का हम जब जाप करते हैं भले हमें इतना हम अटेंटिवली मतलब अच्छे से हम जाप करें या नहीं करे मतलब हमें नहीं पता है अच्छे से उसका मीनिंग वगैरह उसका मतलब क्या उसका अर्थ क्या है, फिर भी हम जाप करते हैं। तो जैसे आग अपना काम करती है वो जलाती ही है उसकी उष्मा, वैसे ही हरिनाम जो है वो भी हमारे सारे जो पाप अंदर से जो भी है उसे वो जलाकर हटा देते हैं हमारे रास्ते से, और वो ऐसे काम करता है हमारे जीवन में। यस प्रभु जी। Let's analyze a little bit extremely powerful. And I'm going to explain a little bit how it's that powerful. तो प्रभु जी अभी बताएंगे आगे हमें कि ये अभी हम इस चीज का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे हरिनाम जो है वो कितना शक्तिशाली है अपने आप में। हमें आइडिया ही हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि इसमें कितना पावर है, कितना इसमें बल है हरिनाम में। हम ऐसे ही नाम जप कर देते हैं, हरे कृष्णा हरि बोल ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसमें कितना बल है। अभी प्रभु जी आगे बताएंगे। यस प्रभु जी। So, in the material world, there is a difference between the name and the object, correct? I gave this example before. I'm going to give it again. It's nice to remind us ourselves to the potency of the holy name, that the subject or the name of the something is not the same as something. Like, for example, I want to drink water. If I can say here, water, see the sound of water, pani, tani, anything, it doesn't satisfy my thirsty objectively. ओके हम इस भौतिक जीवन में जो देखते हैं सारी चीजें अलग अलग होती, उनका भी नाम होता है, लेकिन वो चीजों का सिर्फ नाम ही होता है। और हम जो देखते हैं हरि नाम जो है उसका जो नाम है उसका अर्थ भी है। अभी हम जैसे प्रभु जी ने अपना उदाहरण दिया जिनकी जैसे इनके हाथ में पानी की बोतल है, हम जो बोलेंगे पानी पानी, अगर मुझे सपोज प्यास लगी है, अगर मैं पानी पानी बोलूंगी तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। So I have to drink pani, just like I did now, the actual substance of water to satisfy my thirst. So I understand that the name water and the substance water are different. ओके अभी प्रभु जी ने बताया हमें ना पानी पीकर कि मुझे अगर प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना पड़ेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए।
सिर्फ ये ऐसे नहीं कि मैं पानी पानी करता रहूं मेरी प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं होगा। यस प्रभु जी। But this is in the realm of the material world. In the realm of a transcendental world, you see, when you say the name of Krishna, has the same potency of Lord Krishna. Just like I say water, I'm happy with the water. See, you say Krishna, Krishna is coming to you. You see, maybe we don't fully understand, doesn't matter, but Krishna is coming to you. 100%. ओके, हम देखते हैं कि जो ये भौतिक संसार है इसमें ये सारी चीजें ऐसी होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक दुनिया है उसमें जैसे कृष्ण का जो नाम है, हम कृष्ण को जैसे बुलाते हैं तो कृष्ण हमारे पास आते हैं, हमें हमारा एक वो कनेक्शन एक जुड़ जाता है उनसे। इतनी पोटेंसी, इतना मतलब पावर है, इतना बल है इस हरि नाम में। और हम जब भी कहेंगे नाम कृष्ण तो 100% मतलब पूरा 100% ये कृष्ण हमारे पास आएंगे, हमारा ये मतलब हमारी जो पुकार है भगवान सुनते हैं। यस प्रभु जी। Tadya, what's called Krishna is Tadya, that's the name. Is anything connected with Krishna? Is Krishna. His weapons, his associates, his name, okay? His food. He eats food, it becomes prasadam. You eating prasadam, you get infected by Krishna consciousness. Oh. What you have mentioned Riga, about that weapon, sorry. Oh, that everything related to Krishna is Krishna, like his weapons, his friends, his abode, right? His food, it becomes prasadam, like that. ओके, अभी जो प्रभु जी ने बताया कि वेपन मतलब जो शस्त्र जो होते हैं वो और कृष्ण के जो भी शस्त्र होते हैं, उनके जो दोस्त है, उनमें जो उनका जो धाम है, और जो भी हम प्रसाद भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो कृष्णा से अलग नहीं है, वो स्वयं कृष्णा ही है। यस प्रभु जी। So, spiritual sound has spiritual potency, and material sounds agitates, okay? But transcendental sound, it calms and purifies the heart. ओके, ये जो भौतिक संसार में हम जो भी हम ध्वनि सुनते हैं ये हमें मतलब चूसती है, हमें वो खुशी नहीं देती है। और यही आध्यात्मिक जीवन के, आध्यात्मिक दुनिया की, हम अगर कोई भी वो साउंड, अगर कोई भी चीजें हम सुनेंगे वो हमें मतलब हृदय में हमें सेटिस्फेक्शन, हमें शांति प्रदान करती है। यस प्रभु जी। So, what happened here is that the holy name, it restructures the mind, rewire thought patterns, okay, softens the heart. You see, he changes internally our being. That's called purification. We come in touch, with our true self. So a lot of things that are not true self, they keep giving away. Just like you clean a closet every summer, there's a lot of junk. You throw all those things out. You only keep those things that, you absolutely need, and everything else. I don't need this. I don't need that. You keep giving away. You see, it's a natural, give out of the anarthas. ओके, तो अभी यहाँ पे हम जब हरि नाम का हम जाप करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो भी चीजें अस्त व्यस्त होके रखी है वो एक चीज है मतलब फिर से लाइन में आती है। जैसे प्रभु जी ने 2 वर्ड यूज किए हैं, रीस्ट्रक्चर एंड रीवायर, मतलब वो चीजें फिर से जुड़ के सही जो यहाँ वहाँ बिखरी है वो फिर से सही लाइन में जुड़ती है। और हमारे जो विचार है, हमारा जो हृदय है वो भी शुद्ध होता है, वो मतलब सॉफ्ट हार्ट होता है, और हमें अंदर से वो हमें प्योर मतलब अंदर से हमारा शुद्धिकरण करता है। यस प्रभु जी। So the holy name, by coming close to your heart, he removes ignorance. Krishna said in the Bhagavad Gita, Dadami buddhi yogantam. I'll give you the knowledge by which you can come to me. What is that knowledge? Besides, we can read in the Bhagavad Gita, we can read the words in the Shastra, but what is the knowledge that's imparted in the knowledge, in the heart, in the heart? ओके,
अभी जो हरि नाम है, हम जब इसके नजदीक में जाएंगे, जैसे इसके क्लोज जाएंगे, तो हमारा हृदय में जो भी इग्नोरेंस है, मतलब जो भी हमें ज्ञान नहीं है, वो चीजें हट जाएगी और जो ज्ञान है वो सामने आ जाएगा। और वो कैसे होगा? जैसे हम भगवत गीता का हम उसका पाठ करेंगे, भागवतम का पाठ करेंगे, तो हमारे जो शास्त्र है, जब हम इसका पाठ करेंगे, हम भगवान के पास जाएंगे, और जो भी इग्नोरेंस है, जो भी हमारे पास नॉलेज ज्ञान नहीं है, वो हट के हमारे पास ज्ञान आएगा। यस प्रभु जी। By Krishna's name, our gyan, or our, how to say, our learned knowledge in the mind, it becomes realized knowledge. See, knowledge and realized knowledge. One thing is, oh, fire burns. When I put the hand in the fire, I take it, it hurts. Oh, I realize now it actually burns. And I got a valuable lesson. So this is realized knowledge. And that Krishna gave us that realization in the heart. Okay. अब भगवान का जो नाम है, कृष्ण का जो नाम है, वो हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें प्योर कर रहा है? लाइक जैसे कि हमारा आग में हम अगर हम अपना हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जलेगा, तो हमें पता चलता है कि अरे हाँ, मेरा हाथ जल गया, ये हमें महसूस होगा। वैसे ही हम जब हरि का नाम, भगवान का, कृष्ण का नाम हम जब जपेंगे, तब हमें वो अंदर से महसूस होगा, रियलाइज होगा वो चीज का। यस प्रभु जी। So I want you all, you go back. I don't know, many of you being a devotee or been chanting, maybe 3 months, 6 months, 1 year. You go back to a little bit right after you become a devotee, start chanting, start associating with the devotees. And you see what you are today and what were you, 1 year before, 6 months before, and you see a data point, a ascendance, that is your advancement. You can see your realized ascendancy in spiritual knowledge. You know more today than before when you came in. You realize more today than when you came in. You are stronger today than you came in. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने को आप चेक करिए कि प्रभु जी ने बताया, यहाँ पे नहीं पता मुझे कि कौन कितने समय से नाम जप कर रहा है। कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 3 महीने से कर रहा है, पता नहीं। लेकिन हम खुद को अगर चेक करेंगे कि अभी मैं जहाँ हूँ, और कुछ समय पहले अगर मैं खुद को देखूं कि मैं जब नाम जप नहीं कर रहा था, या फिर मैंने जब शुरुआत की थी, उस जर्नी से लेके अभी तक मैंने कितना एडवांस में, बोला कितना मैंने प्रोग्रेस, कितना मैं आगे बढ़ा हूँ, और मेरे में क्या बदलाव आया है मेरे जीवन में। So I hope all of you, of course, you're going to see, yes, I am a better person than I was 3, 6 months ago, 1 year ago. I'm a better person in so many levels. I have mental, clean mind, not thinking so much nonsense I used to think. I have a clean taste and not eating so much nonsense I used to eat. I have a clean life. I'm not living this crazy life I used to live with karmic friends, going this, that, nonsense. We made advancement. That is the purification, and it's coming from where? From the holy name. We're chanting. Krishna is entering in our hearts slowly, slowly, and effecting a great transformation that we don't see. And the only thing I can say is that, like, sometimes I see there's a boy there, he's 10 years old, and then I see him 5 years later, he's 15. He's a big guy. Well, I see the difference. I saw him 10 years, now I see him, he's 15. But the mother, no, I see every day, he slowly is growing, and she doesn't see like it's just a big deal. It doesn't notice. You see, that kind of change, we have to see. We look back and you make a data points of advancement, how our life is being improved by the devotional service. ओके, तो प्रभु जी ने बताया कि हम
हरिनाम जब जप करते हैं, हम अगर देखेंगे कि हमारे 6 महीने पीछे जाके हम अगर देखेंगे कि हम क्या थे, और अभी हम खुद को चेक करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण हम खुद का करेंगे, तो हम जानेंगे कि अभी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, और पहले जो मेरे दिमाग में जो चीजें अस्त व्यस्त होके पड़ी थी, अभी वो चीजें क्लियर है, अभी मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ अच्छे से। और अपने लाइफ में भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरे जो जो कार्मिक दोस्त थे, जो भी भक्त नहीं थे, जो इधर उधर के जो थे, उन्हें भी मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। और क्रेजी थिंग्स, मतलब कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें मैं नहीं करता हूँ, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। ये धीरे धीरे ये कैसे शुद्धिकरण हो रहा है ये, और ये कैसे होता है, हरि के नाम से, होली नेम से हो रहा है। जैसे कि प्रभु जी ने एक उदाहरण बताया कि कोई 10 साल का लड़का है, और वो 5 साल के बाद हम उसे अगर देखेंगे, तब वो 15 साल का लड़का बड़ा हो जाएगा। तब हम उसमें ये चीज डिफरेंस, एक बदलाव देख पाएंगे उसमें, कि वो कैसे बदल रहा है, कितना बदल गया वो उस 5 साल में। ऐसे ही ऐसे ही हरिनाम जो है वो धीरे धीरे हमारा अंदर से हमारे शुद्धिकरण करता है। यस प्रभु जी। I remember, I hope I'm right. I read, I think in the Nectar Devotion, that the chanting of the holy name dissolves the false ego. By your constant chanting, the false ego gets dissolved. He gets pulverized. He gets minimized. Just like you have this gastric, you take Alka-Seltzer. You know Alka-Seltzer? It's this, you put in the water and go, psh, you know, it is like for stomach, make your stomach better. ओके, हाँ, या, Eno, or whatever हाँ, that is. यस, नो, या, But it's like a pill. It's a big one, right? हम्म, You put in the water, what happened? You go, and it disappear. So the chanting of the holy name is like this. We chant and we dissolve our false ego, you see. And this is the process where now all of us, we're dissolving the ego. And when we dissolve the ego, what is transparent is what? 7 qualities. First one is humility, because you don't see yourself as the big guy anymore, or the big girl. You see yourself like a part and parcel of Krishna, and you see yourself in a humble way, not in a puffed up way, in an arrogant way. You have gratitude, because when you see all things around you, grateful, which is one of the qualities of success. One day I'm going to give a class about success, but one of the qualities, you're grateful. It's the beginning to see that you are becoming a devotee when you become grateful. Grateful for your parents, grateful for your life, grateful for the world around you, and sometimes it's hard, but you're grateful that you can survive by Krishna's grace and overcome your challenges like that with Krishna's in the heart. And also the chanting awakens your surrender, you see, and wake up your spiritual longing. You see, oh Krishna, you're longing for the association of devotees, for taking prasada together to poor Bhagi, and you become grateful, and you become humble, because you see your position in relation to Krishna and in relation to your world around you. You become humble, because arrogance won't get you anywhere, and it only cause you trouble. ओके, put so many things, but I will try to. It's okay. Yeah, You tell okay, me. I'll ओके, ओके, यस। तो अभी प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये चीज उन्होंने पढ़ी है, कि जब हम हरि नाम का जाप करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भी ईगो, जो भी मेला, फॉल्स ईगो, जो मतलब कहते हैं घमंड, जो हमें आ जाता है, वो इसे डिजोल्व, मतलब उसे मिटा देता है। जैसे इनो का एक उदाहरण दिया है, जैसे हम इनो पानी में जब जैसे डालते हैं, तो वो कैसे अंदर घुल जाता, ऐसा मतलब अंदर जाके पूरा ऐसे बाहर आ जाता है चीजें। तो वैसे ही हरिनाम जब हमारे अंदर जाएगा, हम हरिनाम का जब जप करेंगे,
तो हमारे अंदर जो भी फॉल्स ईगो, जो भी अनर्थ है, वो चीजें हट जाएंगी और हमारे अंदर कुछ चीजें अच्छी चीजें मतलब हमारे अंदर बदलाव होना शुरू करेगी। जैसे ह्यूमिलिटी का बताया, जैसे हमें ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आएगी तो हम उससे उससे क्या होगा कि हम कोई भी काम करेंगे, जो भी सेवा वगैरह होगी, तो वो करके हम ऐसे नहीं हो जाएंगे कि ये काम मैंने किया है, बहुत ज्यादा अपने आप पर ही मतलब पफ्ड अप, मतलब हमें घमंड नहीं आएगा खुद पर कि ये मैंने किया है। और दूसरा बताया ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कि हमने जो भी कर रहे जो भी हमारे लाइफ में हमारे आसपास में हो रहा है उससे लेके हम मतलब थैंक यू लाइक होता है, जो कि हमें धन्यवाद करना है हमारे जो फैमिली, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे आसपास जो भी जिसने भी हमको हेल्प की है, वो चीज। और दूसरा है हमारा सरेंडर, जो हम भगवान को ही हम जैसे सरेंडर कर देते हैं। और ये चीजें जब हम सरेंडर करते हैं, ये शुरुआत होती है यहाँ से हमारे भक्ति लाइफ, हमारे भक्ति जीवन की। फिर हम जो भी डिवोटीज होते हैं उनके साथ हम उनका संग लेते हैं, उनके साथ प्रसाद हम खाते हैं। और ऐसे हमारा जो एक रिलेशन जो होता है, एक वो भगवान के साथ जैसे बनता है, तो हम देखते हैं कि जैसा भगवान के साथ मेरा रिलेशन है वैसा मेरा सबके साथ भी है। वो भगवान के ही सबको समझते हैं, तो फिर वो ऐसे धीरे धीरे उनके अंदर से सारे जो अनर्थ है वो हटते रहते हैं। यस प्रभु जी। You see, this quality of surrendering is quite amazing because the surrender attracts Krishna. Because that's one thing Krishna cannot do. Krishna is God, right? He can do anything. He cannot make you surrender. You see? Yeah, somebody may say, well, he can force you and put a hammer in your head, force he can. But that is a fake surrender. And Krishna, of all things, he doesn't want to, not even a bit of fake surrender. He wants honest, sincere. This is what attracts him. And he cannot give this surrender or create this surrender, you see? And so how it is happening then? Excuse me. It happened by the mercy of the devotees. Therefore, Krishna said, those who teach this, this knowledge to the other people is very dear to me. He's doing something that I cannot do. Krishna can do, but he doesn't want to do. He wants you to naturally surrender by the internal workings of your heart. You see, not being pushed, not being tricked, not being in any way cajoled to surrender. Your natural surrender. Your natural. Because you surrender when you're grateful. You're grateful. You get some in life. Krishna, please, Krishna, help you. And you're so grateful. Oh my God, thank you. Your surrender, it becomes manifest. And this is a sign of our advancement in spiritual life. And it's coming through the holy name that is affecting the purificatory process. ओके, तो जो सरेंडर हम करते हैं भगवान को, तो इससे भगवान का मतलब भगवान को हम आकर्षित करते हैं। क्योंकि भगवान को ये चीज नहीं चाहिए कि हम भगवान को एक नकलीपन सा हम उनको जबरदस्ती से उनको सरेंडर कर दे। भगवान को ये, कृष्णा को ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि हम अपने हृदय से खुद से हम सरेंडर करें। लेकिन कृष्णा जो है वो खुद हमें ये चीज फोर्स नहीं करते कभी भी। लेकिन ये सरेंडर हमारा कहाँ से आता है? जब हम सरेंडर की ये जो भाव है, ये आता है हमारे जो जो भक्त है उनकी कृपा से, उनकी मर्जी से हमें आता है। और भगवान चाहते हैं, और भगवान ये चीज कहते हैं कि ये इस चीज का ज्ञान, इस चीज का जो भी नॉलेज, जो भी पढ़ाएगा, जो भी समझाएगा दूसरों को, वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। और जब भगवान को हम हमारा नेचुरल सरेंडर मतलब अंदर से हमारा हृदय से जो सरेंडर आता है, हम भगवान को जब करते हैं, तब हम भगवान को हम प्रे भी करते हैं, ग्रेटिट्यूड मतलब भगवान को धन्यवाद करते हैं। और हम किसी भी चीज की अगर जरूरत होती तो हम भगवान से कहते हैं। और जो कृष्णा है वो इस चीज को हमारे साथ रेसिप्रोकेट मतलब हमें जवाब भी देते हैं। तो ये एक साइन होता है कि हम हमारे भक्ति लाइफ में, हमारे डिवोशनल लाइफ में हम एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो रहा है। यस प्रभु जी। There's another level of understanding of the holy name.
And that is a beautiful one too. And I'm gonna explain here right now. You all have heard, all students, you all have heard of a thing called DNA. That is some of you are biology students. DNA basically has all the information of the future human being stored in a piece of nanometer, very small, you see, but all the information is there in the chromosomes, the color of your eyes, some of your nature, your gender, everything is there, in the DNA. Once the DNA comes, it start to develop, the full body is there, but everything start from this DNA. Everything is there for the developing of the human body. So similarly, the holy name is a DNA, is a sound DNA of everything you need to advance in Krishna consciousness. I'm going to go further explain, but I don't get long. या नो प्रॉब्लम. ओके, तो प्रभु जी ने बताया कि हरिनाम जाप जो हम करते हैं इसका कोई अलग अलग लेवल नहीं है. जैसे प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया है, जैसे हमारे डीएनए होता है, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जो भी हमारी होती है वो सारी वहीं पर जमा होती है. तब हम जैसे इसमें जो नैनोमीटर जो है प्रभु जी ने जो भी एक्सप्लेन किया है, तो उन सारी चीजों से हम जो विश्लेषण करना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि क्या नेचर, क्या उसका नेचर है, क्या उसका जेंडर वगैरह. तो इन सारी चीजों की जानकारी हमें वहां से मिलना शुरू होती है. वैसे ही हरिनाम जाप जो है वो एक डीएनए की तरह है. ये जब हमारे कृष्ण भावनामृत में आता है वैसे ही सारी चीजें हमें देना शुरू कर देता है. यस प्रभु जी. Because let's say we're chanting and DNA, the spiritual DNA of the holy name will give what you need. You may need knowledge more than other people because you want to know certain things, and that is a block in your developing a spiritual life. So that will come to your heart. Dhadami buddhi yogantam. You see, you may need a type of prosperity so you can be a little peaceful, and then you can chant Hare Krishna peaceful, because if you're always looking for money or job and all the bills you have to pay, you not be, you need a peaceful mind. That will come to you. Whatever is necessary for you to continuously chant the holy name, and the holy name also will give you the ananda, the satisfaction in the heart from time to time to keep you going in this path of devotional service. You see, so this holy name, in terms of vibration, you act indifferent, each one of us, in a way that fulfill what we need to keep chanting the holy name, keep going towards Krishna in devotional service. ओके, अभी प्रभु जी ने बताया जैसे डीएनए जो है ये हमें जैसे आगे बढ़ाता रहता है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन देता है. वैसे हरिनाम जाप जो है वो हमें भक्ति लाइफ, जो हमारी जो डिवोशनल लाइफ है, उसे हमें आगे बढ़ाता है और हमारा जो हृदय है उसको शांत करता है. जैसे कि जिसे भी जो जरूरत है, जैसे उदाहरण बताया कि किसी कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, उसे शांति नहीं है, तो वो उसे क्या चाहिए होता है, उसे शांति चाहिए होती है. तो वो अगर ये चीज को लेके, ये अपना एम लेके अगर वो करेगा कि मुझे शांति चाहिए, तो वो हरिनाम जाप करेगा, तो वो हरिनाम उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करेगा, उसे वो शांति प्रदान करेगा. और ऐसे ही जिसे भी जो जरूरत होती है, वैसे वैसे हरिनाम उसके साथ रेसिप्रोकेट करता रहता है, उसे वो जरूरत की चीजें हमें उसे देता रहता है उसके जीवन में. और ऐसे ही हरिनाम जाप से उसके वाइब्रेशन से, उसकी जो ध्वनि है, उससे हम ऐसे ही उसका जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं. और हमारी जो भी रुकावट जो आ रही जीवन में, वो सारी हमें देते रहते हैं और हमारे लाइफ में और हमारे डिवोशनल लाइफ में, और हम आगे बढ़ते रहते हैं. यस प्रभु जी. So when you have those things, you are in the path of devotional service. Now, the practical way is to let the holy name purify us. Okay, so chant with attention, not perfection, with attention. You see, you try your best. Okay, daily fixed rounds.
This is what Prabhupada gave us. In the beginning, devotees have to chant 64 rounds. You see, just like the Gaudiya Mata do. But devotees are doing all kinds of things, saying, so then Prabhupada said, we cannot chant. So instead of cheating, and say, chant, you have to chant, Prabhupada said, okay, we're going to go to 32, And then after a while, the devotees again went to Prabhupada and said, no, we can't do it, it's too much. Okay, 16. And then they again went to Prabhupada and said, no, that's too much. Prabhupada said, no, it's 16. You stay right there and don't change. Prabhupada knew. Okay, so we chant 60 rounds. We do kirtan with devotees. Can even sing in alone the holy name if you cannot. We do kirtan. I love our kirtans in the beginning of our classes. Beautiful Antara Mataji or Nightingale. Now we have what is the name of the Mataji? Anyway, she was chanting today. It was nice. Anushka. Anushka. Thank you. Anushka. Very nice. Very sweet voice. But she got a better microphone though. Okay. So hearing while chanting, we should do. Now, there is an amazing thing here. Now, carry on. You translate this. I see some movement in there. Because my brother is here, so Life is going on. What to do? I don't want to get disturbed in this class, so I moved it. Okay. तो प्रभु जी ने अभी बताया यहाँ पे कि जैसे हरिनाम जाप जो हम करते हैं उसमें कुछ चीजें हमें फिक्स रखनी होती है। जैसे हम हरिनाम जाप करते हैं उसमें हमें अच्छे ध्यान देकर हमें नाम जाप करना है। उसमें हमें एक परफेक्शन नहीं लाना, उस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ध्यान से नाम जाप करना है। और हमारे जो नाम जप की जो माला होती है, कुछ राउंड्स होते हैं, उसे हमें फिक्स रखना होता है। जैसे हम 16 माला का जाप करते हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया क्योंकि जब स्टार्टिंग शुरुआत जो थी हमारी इस्कॉन में, तो जब डिवोटीज जो थे भक्त उनको प्रभुपाद ने कहा था कि वो 64 माला का जाप करेंगे। तो वो जब जाप कर रहे थे तो उनके साथ उनके पास और भी बहुत सारी सेवाएं थी, तो वो सारी चीजें एक साथ में नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी सेवा और पूरी 64 माला साथ में नहीं कर पाए। तो वो प्रभुपाद के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो इसे हम कम करके 32 माला करते हैं। फिर भी सेम चीज प्रॉब्लम कर रहे थे, फिर से सेम चीज प्रॉब्लम हुई, तो फिर से प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, इसे कम करके 16 माला कर देते हैं। फिर डिवोटीज जाके फिर से वो कर रहे थे 16 वाला और सेवा दूसरी। तो फिर से उनको प्रॉब्लम होने लगी, फिर से प्रभुपाद के पास गए, लेकिन प्रभुपाद ने इस बार कहा कि नहीं, इससे कम नहीं होगा, ये चलान इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा सेवा, और 16 वाला हो जाएगी। You see how it is? करते हैं। Carry on. Finish? Not yet. One point is remaining. You finish. Okay. तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में शुरुआत में हम जो करते हैं कीर्तन, प्रभु जी को बहुत अच्छा लगता है। जैसे अनुष्का माता जी करते हैं, अंतरा माता जी करते हैं, तो हमें कीर्तन साथ में करते हैं तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होता है। यस प्रभु जी। Okay. Now there is the next item for practical ways to change the holy name. This is the practical ways. Okay. It is to avoid offense. This is very important because when you drive a car, we step in the accelerator. But if you go to the accelerator and you step in the brakes, you're jerking the car and you're not going fast enough what you want to go. Because offenses is a step in the brake of your devotional service. Okay. तो अभी प्रभु जी बताएंगे कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसे हम हमारी लाइफ में जैसे लाएंगे, जो हरिनाम जाप करने के कुछ प्रैक्टिकल वेज बताएंगे। और वो हमें जो भी ऑफेंस का हिंदी क्या होगा, कोई बताएगा? मुझे नहीं पता, सॉरी। अपराध, सॉरी। थैंक यू सो मच माता जी। तो अपराध से हमें बचना है नाम जप करते हुए।
जैसे एक उदाहरण बताए कि हम जैसे गाड़ी कार चलाते हैं तो उसमें एक एक्सीलेटर होता है जो हमें, उसे हम जब प्रेस करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरा हम अगर कभी जरूरत होती है तो हमें उसे ब्रेक भी देना होता है, रोकना भी होता है गाड़ी को। तो वो हम जब जैसे हम चल रहे अचानक से हम ब्रेक दबाते हैं तो अचानक से हमें एक झटका देता है। अगर वो सही समय पे नहीं करेंगे उस चीजों को, तो वो हमें कभी एक्सीडेंट या फिर ऐसी चीजों को जो नहीं होनी चाहिए वैसे हो जाएगा। तो वैसे ही सेम हरिनाम के साथ भी हो जाएगा, तो हमें उन चीजों से बचना होगा। यस प्रभु जी। And there is many kinds of offense. And we have to be careful. There is one offense you have to avoid at any cost. It's called Hatimata Aparad, the mad elephant offense. Now, yes, carry on. ओके, हम जब हरिनाम जाप करते हैं हम इसमें बहुत सारे अपराध कुछ होते हैं हमसे, लेकिन उससे हमें बचना होता है। जैसे एक हाथी मदमस्त होके, जो पागल हाथी जो कहते हैं, वैसे हमें नहीं करना है। यस प्रभु जी। Imagine a porcelain shop, big shop, many things with nice, beautiful crystal things and nice cups, very nice, big plates, everything. And then this elephant comes in and he's mad with Hutuki. There's some kind of no, he took something. He got mad. He goes there and smash everything. That is the mad elephant offense. This is what you do in your garden of devotional service. ओके, अभी जैसे प्रभु जी ने उदाहरण एक दिया है कि सपोज करो, सोचो कि एक दुकान है सुंदर सी, उसमें बहुत सारे, उस दुकानदार ने बहुत सारे सुंदर तरीके से उस पूरी दुकान को अच्छे से जमा कर रखा है, सारी एक एक चीज करके। और उसी समय अगर कोई पागल हाथी आए, अपनी मेहनत से उसने सब कुछ अच्छे से जमा के रखा है, वो एक पागल हाथी आए और उसे उस दुकान में घुसकर सारी चीजों को तहस नहस कर दे, सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दे, तो कैसे होगा? तो उसी तरह से हमारी भक्ति जीवन में भी है कि हम अगर कुछ भी अपराध कर देंगे हरि नाम जाप करते हुए, तो हमारे जो भी पूरी डिवोशनल लाइफ पूरा जो है पूरा वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। यस प्रभु जी। In Mayapur, we had the two elephants in there. And one day, one elephant, he got really agitated for the two females, and she was like, she actually ended up killing the chokidar, no, what, mahant. She killed the mahant. It was a very sad thing, and he took him, he threw in the floor, he did something terrible, and poor guy, he was taking care of the elephant, who knows. So because of that, the elephants, they went back to, we some place, a zoo or something to take care of the elephants. We don't have elephants anymore in Mayapur, as far as I know. या ओके, अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये उदाहरण नहीं है, एक सत्य चीज है ये। जैसे मायापुर में हमारे पास दो बड़े हाथी है, वो फीमेल हाथी है, फीमेल एलिफेंट है। तो वो ऐसे एक बार के लिए वो मतलब एजिटेट हो गए, मतलब उनको मतलब पागल की तरह मदमस्त जैसे हो गए थे, और वहां पर जो ध्यान रखने वाला जो चौकीदार है महंत, उसे उस पर हमला कर दिया था उन दोनों हाथी, फीमेल हाथी ने। तो पता नहीं किस चीज से वो एजिटेट हो गए थे, तो बहुत सारी चीजें भी वहां पे अस्त व्यस्त कर दी थी। और अभी इन सारे कारणों की वजह से अभी वो कहीं पर जू पर या फिर कहीं पे उन्हें रख दिया गया है। अभी अभी फिलहाल में मायापुर में कोई हाथी अभी फिलहाल वहां पर नहीं है, जितना प्रभु जी को पता है। यस प्रभु जी। So the first thing we should do, because this is part of the chant of the holy name, is something that can stop your growth in devotional service. Is the offense, aparad, particularly the aparad of the devotees of the Lord. You see, and there's types of aparads I'm going to mention briefly here, and we're going to avoid this, okay? ओके, तो प्रभु जी पता है कि सबसे पहले हमें ये चीज पर ध्यान देना है कि हमारे जो भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो भी भक्ति जीवन में जो आगे ग्रोथ की, उसे सबसे पहले रुकावट लाता है हम जब अपराध करते हैं। और वो भी अपराध कौन सा होता है कि हम भगवान के जो भक्त है, कृष्ण के जो भक्त है, उनके प्रति जो भी अपराध करते हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट लाता है। हमें इस चीज से बचना है, और प्रभु जी यहाँ पे बताएंगे कुछ चीजों के बारे में। यस प्रभु जी। So we have the 10 offenses of the holy name. We have one time we did a podcast on that. But
we're gonna remind the first thing is to offend the devotees that dedicate their lives in preaching the glories of the Lord. This is the essential, the important one. You see that we have to be careful how we deal with each one of us, and we have to be very humble, just like it says there before, humble, honest, you see, and be careful because, we don't want to cause an offense. Sometimes even we didn't know we even commit an offense, but the devotee feels offended. Nowadays, everybody feels offended with everything. They look at your face and I'm offended. So well, what to do? Not looking good, but then you don't like it. What can I do? You see, this is what it is. So we have to be careful in dealings with devotees. That is a little joke aside. This is what I'm trying to say here. Be very careful. अभी प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारे पास हम जो भी जिस अपराध से बचना है वो पूरे होते हैं 10 नाम अपराध। उसके रिलेटेड पर्टिकुलरली कभी और पॉडकास्ट पूरा और अलग वीडियो हम करेंगे पूरा। तो उसमें सबसे पहला जो आता है भगवान के भक्ति के प्रति हमें अपराध नहीं करना है। उस भक्त के प्रति जिस भक्त ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में भगवान के प्रचार में लगा दिया है उसके प्रति अपराध नहीं करना है। उसके जो भी भगवान के भक्त है उनके साथ हम जब भी हमारा जो भी डीलिंग करते हैं बातचीत करते हैं तो हमें बहुत संभल के करना है। ऑनेस्टली मतलब ऑनेस्टली का हिंदी मुझे नहीं पता, सॉरी, आप समझ जाएंगे। और बड़ी विनम्रता से उनके साथ हमें पेश आना है। ऑफेंस नहीं, अपराध नहीं करना है हमें। यस प्रभु जी। And the gateway to aparad is krodha, anger. Sometimes anger gets to our nerves. And when we get krodha, was that kama esa krodha esa rajagunam samudbhava. We fall in the mode of passion. We fall in the mode of passion, we lose our mind. If you go to the prison's house anywhere in the world, most of the people that are there because one moment they lost it. They were in a state of anger and they did some stupid. And now they're paying for big part of their lives. Yes. अभी हम जो अपराध करते हैं उसका एक बोलते एक पॉइंट जहां से शुरुआत होती है वो होता है गुस्सा, क्रोध। अब जब क्रोध आता है हम हमारी बुद्धि को हम खो देते हैं। और अभी जैसे बताया है उदाहरण की हम अगर किसी भी जेल में जाए तो वहां पर लोग जो भी कैदी बने हुए हैं तो वो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि एक उनसे कुछ ऐसा अपराध हो गया था, ऐसा कुछ पाप हो गया था कि उस एक पर्टिकुलर उस समय पे उन्होंने अपना जो क्रोध में आ गए थे और कुछ ऐसा कर दिया था उस क्षण में, तो उसका भरपान उन्हें पूरी लाइफ में यहाँ पर करना पड़ रहा है। यस प्रभु जी। And I have seen krodha, it's like it goes up very quick and to go down goes very slow. You see? So you all know, right? And I never seen a person which is under anger to cut the anger just like that. The person is so much involved in the situation. He feel outraged. He feel, I'm right in this thing. He keep pushing. He can't step back, see what he's doing, see the other part. He may even be right, but to act in anger doesn't make right. It makes right wrong. You see, so we have to be careful because anger can bring, offense. You see, and an offense is detrimental to our development of Krishna consciousness, to the state of consciousness that we're in peace and we're, doing what we have to do in devotional service. अभी जो क्रोध आता है वो हमें जब क्रोध आता है हमें वो बहुत ही तेजी से आता है और वो जब क्रोध कम होना होता है तब वो बहुत धीरे धीरे होता है। ये इसका एक ग्राफ बताया, लेवल बताया है। और ऐसा कोई नहीं है कि उसे ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि उसे कभी क्रोध आया और क्रोध आ रहा है और तुरंत उसे कट करके वो मतलब पीछे ऐसे चला जाए। ऐसा कोई पर्सन नहीं है। इसलिए क्रोध से हमें बचना है
हमारी भक्ति लाइफ में हमें क्रोध के प्रति मतलब क्रोध में आकर हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें शांति से आगे बढ़ना है। अदरवाइज हमारे भक्ति लाइफ में ये बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें शांति की जरूरत है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्रोध की नहीं। पर अदरवाइज ये फिर हमें अपराध की तरफ और ले जाएगा, अपराध करवाएगा क्रोध। यस प्रभु जी। So you all be very careful. You guard your devotional service, just like you're guarding your fruit tree. So the cows won't go eat or the monkeys won't steal it. Sometimes here I go around, they have jackfruits and the neighbors, they put a bag of plastic, and cover the jackfruit so nobody will take it. So you have to do that to your devotional service. You cover it. Don't let any of these things affect your devotional service. वंडरफुल। तो जो भक्ति जीवन में हमें ऐसे ही बहुत ध्यान पूर्वक रहना है। जैसे ही कि कोई गार्डनिंग करता है, मतलब कोई छोटी छोटी चीजें उगाता है अपने आसपास में, अपने आसपास की जगह में, तो क्या होता है कि जो बंदर बंदर आते हैं और उन सारी चीजों को हमने कितनी मेहनत से उगाया है, वो सारी चीजों के जो भी फल होते हैं वो तोड़ के ले जाते हैं या फिर सारी चीजें अस्त व्यस्त कर देते हैं। वैसे ही भक्ति जीवन में भी है। हमें जैसे कोई जैक फ्रूट का प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि उस चीज को मतलब एक अच्छी तरीके से ढक देते हैं, कवर देते हैं, ताकि जो बाहर के कोई लोग आके या फिर कोई भी जीव जंतु या फिर कोई भी बंदर आके उसे मतलब खराब ना कर दे, उसे लेके ना चले जाए। तो वैसे ही हमारी जो भक्ति जीवन है उसे भी हमें अच्छे से तरीके से कवर करके रखना है और ऑफेंस नहीं करना है। यस प्रभु जी। So I have the last one is an interesting one because when you come to the stage, you know the holy name is really working on you. But Bhagi, I have a better mantra than the holy name. Ooh. Ah. What Bhagi is saying is this mantra. You approach Prabhuji, Mataji. How can I help you? Because this will give more holy name to your fame. Okay? How can I help you? You see, it's amazing how people can open up to you, reveal the mind, you make a friend, and you serve the devotees. We're here to serve each other. And Krishna in the heart, he is seeing each one of us, and he sees your attempt to serve a devotee by instructing, by actually help. People sometimes think, oh, how I get my phone number changed, or how I make my washing machine work. They have the new side, they have to go to the temple, how to fix my car, whatever. In Mayapur, I do a lot of stuff like that. They come in, new people, where is the gas walla? Where is the pipe walla? Where is the electric walla? I'm full of wallas, all over my house. It's nice, because they do not know. I did all the research. I know where everybody is. I connect them. You call them, come here, this house, you do this work, that work, like that. And they're very happy. They go to the temple, they're peaceful. This is the physical help. There's other helps, give your friendship, give a friendship to to the devotees. What is your name? Mata, Prabhu, oh, where are you from? Oh, how long being a devotee? Like that. This is called soft conversation, but it goes in the heart and makes impression. Okay? So that is the service to the devotees. And when you're doing this, without even thinking, you have a good stage in the holy name parikram. ओह वंडरफुल। ओके, तो प्रभु जी ने बताया कि जो हरिनाम जाप है वो बहुत ही ऊपर है, लेकिन मेरे पास उससे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और उससे भी एक बड़ा मंत्र मेरे पास है। वो है हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये एक वो चीज है जब भी हम किसी से पूछेंगे, क्योंकि हर आजकल मतलब जैसे हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो हम अगर किसी से पूछेंगे तो वो हमारा हम
हमारी तरफ ओपन अप होगा, हमारी तरफ खुलेगा, उससे जो भी परेशानी है वो बताएगा, और हम उससे एक ऐसे मतलब उससे एक दोस्ती बनाएंगे, मतलब हमारे डिवोशनल लाइफ में। तो फिर धीरे धीरे ऐसे हम चीजें उनकी हेल्प करेंगे, तो कृष्ण देखेंगे कि हाँ कि ये अच्छे से उन्हें मतलब सेवा कर रहा है भक्तों की, उनकी मदद कर रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे मायापुर में प्रभु जी जाते हैं तो बहुत सारे होते हैं कि कहाँ पर पाइप वाला है, कहाँ पे फ्लावर वाला है, ये चीजें अलग अलग होती है। तो इन सारी चीजों की जब हेल्प करते हैं, तो हम ये सारी एक्टिविटी एक साइड में हो गई, ताकि हम शांति से हमारा भक्ति लाइफ अच्छे से हम उसे निभा सके, हमारी भक्ति लाइफ को। तो ये एक फिजिकल एक हेल्प हो जाएगी। हम अगर किसी से अगर कहेंगे कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो ऐसे हमें हमारी जो फ्रेंडशिप, हमारे जो थोड़ा समय है, हमारे हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। तो हम इससे और शुरुआत ऐसे करनी है कि हम किसी से उनका नाम पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, और उन्हें एक सॉफ्ट, एक अच्छे से उनसे बातचीत, एक अच्छा कन्वर्सेशन करना है उनसे। तो ऐसे हम भक्तों को हमारी हम सेवा दे सकते हैं, और इससे कृष्ण बहुत खुश होते हैं। यस प्रभु जी। Krishna bahut khushi. Correct. यस। You spoke very correctly. I got that one. Bahut khushi. So we're almost in the top of an hour. I'm going to give the final conclusion here. You can prepare your questions. We have maybe 2 or 3 minutes question. Okay. So the holy name, he transformed the life of a devotee. In the beginning of the class of the podcast, I was saying you go back, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, and you see how much you have come in devotional service. You see the effect of the holy name is in there. Very subtle, but it is there. Okay. So devotees, they chanted, they experience less anger. They have clarity of mind, purpose, right? Is stronger compassion because it's rooted in the spiritual emancipation of our soul and detachment from bad habits. Okay. So sometimes devotees they become more attached to bad habits. What happens is when they become purifying themselves, the bad habits come, it floats in the top, you see, and they didn't know how to deal with that. They need association, they need conversation, they need strength, and somehow they don't have. And then they think, well, this thing is not working. I become more attached. I become more attached to my bad habits, you see. So you have to be careful because when you purify yourself, sometimes it's underneath there is some bad habits, that seeds that didn't sprout, but because of your purification, the seeds sprout very quickly, and then you have to deal with some bad habits that you have, and then this affects you. So you have to be steady. You have to take faith in the spiritual master, Srila Prabhupada and Gurudev, and you have to take faith in that, and you always keep forward. Krishna will never abandon the devotee. He says that in the Bhagavad Gita. He only abandoned when you abandon. I give up. Then what Krishna can do? You give up. But if you're there, you keep there. Krishna will never let you down. But if you just exit the life of devotion, then what Krishna can do? You have a free will, right? ओके। तो अभी फाइनल कंक्लूजन प्रभु जी यहाँ पे दे रहे हैं, तो जिसके भी कुछ सवाल वगैरह है वो अपने तैयार करके रखना चैट बॉक्स में, या फिर हम लास्ट में माइक ऑन करके लेंगे। तो अभी हरिनाम जाप करने से भक्ति भक्ति के जीवन में जो भी बदलाव जो आता है, वो देख सकता है कि अब वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले उसने यहाँ पे जब से जर्नी शुरू की हो, तब वो पहले कैसा था और अब वो कैसा है, वो उसका इफेक्ट देख सकता है अपने जीवन में। वो एकदम ऐसे नहीं दिखता है सामने से, लेकिन वो सटल वे में कहीं ना कहीं दिखता है वो हमें, कि वो पहले उसे कितना ज्यादा गुस्सा आता था, अभी वो उसे गुस्सा क्रोध अभी कम आ रहा है, अभी वो बहुत ही दयालु हो गया है, विनम्र हो गया है अपने जीवन में, और जो भी उसकी बुरी आदतें थी उससे वो डिटैच, मतलब उससे इतना लगाव नहीं है।
तो ऐसे धीरे धीरे कुछ बदलाव आते हैं। लेकिन जो भक्त है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो भी बैड हैबिट्स होती है वो कहीं ना कहीं बीज के रूप में दबी होती है। फिर वो जैसे आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं बीज के रूप में जो भी दबी होती है वो फिर से उसे आकर कभी कभी परेशान करती है। वो फिर से उसके जीवन में भक्ति लाइफ में आगे आती है, रुकावटें लाइक लाती है। तो उसे फिर भी रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। उसे विश्वास रखना है श्रील प्रभुपाद पे, गुरु महाराज पे, भक्तों पे, उस पे मतलब भक्तों पे, श्रील प्रभुपाद पे, गुरु महाराज पे, भक्तों पर पे विश्वास रखना है। क्योंकि वो उनकी कृपा से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि अगर तुम ही अगर गिव अप कर दोगे, चीजों को छोड़ दोगे, तो मैं भी कैसे मदद कर पाऊंगा तुम्हारी। तो हमें गिव अप नहीं करना है, चीजों को आगे लेके चलना है, क्योंकि ये हमारी भगवान ने हमें फ्री विल दी है। तो हमें इस फ्री विल का, हम अगर फ्री विल में अगर हम गिव अप ही कर देंगे, चीजों को छोड़ देंगे, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। यस प्रभु जी। So, in the closing statement here, purity is not artificial, okay? It's our original nature. Originally, we're pure. You got a little dust here and there, So we're removing that by the chanting, Chettoda Paramadan. The holy name doesn't purify the heart only, it reveals the soul. Slowly reveals your transcendental nature, the soul. And you chant sincerely daily, give the holy name space in your heart, and watch your life transform. Okay, so this is our conclusion. I'll take questions now, and try to a little bit over the hour. I apologize. There's an exciting what do you call We need topic here. या ओके। तो अभी प्रभु जी ने बताया कि हम जब नाम जप करते हैं, इससे सिर्फ हृदय का शुद्धिकरण ही नहीं होता है, हमारी जो आत्मा होती है उसका जो एक उसका जो सही ट्रू नेचर जो है वो भी बाहर आता है। और धीरे धीरे हमारा जो हृदय है, मतलब जो भी चीजें मतलब रिवील होती है, रिवील को मतलब प्रकट होती है वो चीजें, हमारा जो सही स्वभाव है वो। और हम देख पाते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है हरि नाम जाप करने से। यस प्रभु जी, डन। किसी का कोई सवाल? Hare Krishna. Okay, first I want to thank everybody for being there. Beautiful. This is a group that really proud of you all. Thank you for stick around, and we have some good time together. Hi, Dan. Dan is there. I saw you before, but I only see 1, 2, 3, 4, 5 in here. That's 11 or 12. So thank you for you to come, and we'll see you Wednesday. I'm really ready to go to India anytime now. So I'll let you know if we're not going to have the Wednesday proper reading, which I love so much. Thank you, Kushbo, for the translation. You're getting better and better all the time. And Neha for this host. He's a great host. And I feel proud to be here with you all. Any questions? Let's have it. किसी का कोई सवाल? माइक अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Okay, till then Hare Krishna, Prabhuji. Okay, Neha Mataji has a question. Yes. Who is the question? I don't Neha, see here. Neha Mataji. Neha, okay. Okay, Neha, tell me. So, Prabhuji, when devotee have fall down, na, so how can we like help him or her during this process? Like, um how can we help her in like during fall down? How can we? I don't know how to put this, but How to bring it back. How can yeah, he yeah, rewire them? that's yes, How to bring it back. Okay. yes. Well, first of all, the nature of the fall down. Okay, the devotee fell and wants to come back. The devotee fell, is angry. He doesn't want to talk to anybody. I don't want to even, I become a Christian or something, So it's the nature, So if a devotee he fell down, we have to be compassionate. We have to be compassionate because I tell you, any one of us can have problems in devotional service. Okay. And falling down, there's levels of falling down. Okay.
But the thing is, we shouldn't criticize. Okay? Criticizing won't help anything. You should have done this, you should have done that. We don't want to hear that. We want a person that is in difficulty in the spiritual life. They want to have a compassionate association. You see, before the preaching start to bring that person back, you have to earn that trust by compassionate association. And then the trust is established in the heart. Then the person is willing to listen to you. Then you slowly, just like preaching, we restart the preaching, and start slowly bring the person back. Now, one of the things, there was a devotee that he had a problem. And Prabhupada, there was discussing this with some people in the room. So Prabhupada said, let's keep this confidential. But some devotee went there and blabbered to everybody. So everybody come to know, and the devotee felt ashamed, and he left. And Prabhupada said, see, now this devotee is ashamed, and he's left. And this is no good. You see, because, he feels ashamed of what he has done. He could stay in the temple and doing the service, but now he is ashamed. He left. I don't know what happened to the devotee. Maybe he came back, but I don't know exactly what happened there. But Prabhupada was very concerned that there is gossip and there's proper analysis. We analyze the situation because we're mature individuals and we make conclusions. And gossip is you just like to divulge, this Jewish news, and you feel like I'm the owner of this great news, breaking, alert, look what I have, this devotee, this happened, that happened, look what I know, I'm better than anybody, you see, and this is not a good thing. Gossip is like this. You take a big pillow of feathers. Now you take a knife, you rip the pillow, you throw the feathers out. Now try to bring all the feathers back to the pillow now. You see, that's gossip. It's like you're ripping the pillow, you have all these feathers around, the wind is blowing. Now you go after each feather and bring it back. You can't. It's a terrible situation. So don't be part of this. Don't be, people are doing the gossip, fine, but it is not should be you. It's because Krishna is looking in your heart, each one of you. What you're doing in this situation, what the other people doing, they're going to deal with Krishna and Guru and Krishna, you see, but it's not coming to you. But you can analyze and you can soberly, see that, okay, this is the reason this is happening, don't make judgment on it because, you never know exactly, the full story of anything. Okay. So, you be careful. You bring the person with compassionate preaching. It's a delicate preaching, not judgmental, not, finger pointing, blah, 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 blah. Shastra say this, Shastra say that. You have to do this, you have to do that. You're in Maya. This is not how it works. Okay. And you put yourself in the person's shoes. Would you like to be treated like this if you have, God forbidding, some challenge in your devotional service? You want to hear somebody to be your friend next to you, not on top of you, next to you, supporting you emotionally, and going through this difficult time. You can't just give it in a gift, like that. Just give a quick reminder. Okay, Prabhuji. But that Thank is, yeah, Neha, you got it? you. Yes, Prabhuji. I got it. Prabhuji, Tanushri Mataji has. Yeah. I see only 4 people here. Where is that? Yeah, in chat box. Let me see here. Okay. Yes, Tanushri. Okay, here. Okay, Tanushri Arya. Tell me. There she is.
The question is in chat box. Okay. Question in the she box. mentioned her question in chat box. Yeah. Chat box, Neil. It's a big one. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Thank you so much for this amazing class. My question was, yes, we changed by this devotional process, but sometimes we hit by Maya, and there is a phase comes when we become detached from Krishna and devotional service. So how to come over this phase? Okay. Actually, you never detach from Krishna. That's the first thing you have to understand. Krishna is there. You know, I told a story. There's no need translation, right? We can go this in English, right? I told a story that in Australia, this girl, she was there for 2-3 months in the temple. She said, this is no good. So she left, and she was in a bar, and she was doing whatever doing the bar. And this guy came in, and they start talking about it's a new guy. They start chatting in the bar. And I said, what are you doing? What are you doing? They try to tell a little bit of their lives. Say, I was a devotee of Krishna and I was doing this place. And the guy would say, oh, really? How is that? And then she was explaining, the things, the Krishna comes, the chant of the holy name and everything. And the guy said, that sounds good. What is this place? This yoga place. So he went to the temple and he became a devotee. So this Mataji thinks like she was detached from Krishna, but she couldn't, detached from Krishna. She was talking about Krishna, and she made a devotee, even though she was like a full karmi in the bar, drinking, whatever she was doing there. Okay, so you never detach from Krishna. Krishna is always with you, because once you uncover a little bit of your soul, you cannot put it back. It's like toothpaste. Once the toothpaste come out, you cannot put it back. True. You see? So I just wait a second. There's another question. Let's see. No, did you get at that? Do you understand? Okay, so so we cannot be detached from Krishna, but at the same time, yes, we have some difficulties. Now, these difficulties, I'm gonna tell you, they are like the dark clouds that come, but you have to have faith. Just like right now, today in Kuala Lumpur, it rained 4 times and it was sunny 4 times. Well, I think it was some kind of a rainy season, And morning rain, stop, sunshine. Then rain again, stop, sunshine. Like this, that's Malaysia. So the thing is, when the rain comes, I know that's going to stop, and the sun we're going to shine again. So when there is a little bit of a difficult, you have to have faith that the sun will shine. Krishna is there. We just lost contact, a bad reception. That is the thing, it's a bad reception. You just have to have faith. Reception will come, just like the internet sometimes. There was one day a podcast, the internet was so bad, right? It was so bad. He came in and out, the Mataji disappeared, she comes back again, in some other phones to the computer, but we did it. We did something. So similarly, you have to have faith that if you keep chanting, you overcome very easily. The thing is, we stop chanting, okay? But the knowledge you gain will never go away. You can't. You're not this body. How you are? It's not possible. You see, you're not this body. You can't unsee what you have seen when you see Krishna. You cannot unsee. Just like I said, it's like toothpaste. Once come out of the tube, you cannot put it back. Okay, so we're going. So the thing I can give advice is this: you become determined. One of the quality of the voice is very determined, and Krishna see your determination. You come to assist you. You just have to have faith in that. Okay, and sometimes you lose that faith, but have faith anyway. Just like Jayapataka said, you cry for Krishna.
But if you cannot cry, you cry because you cannot cry. But if you cannot cry because you cannot cry, then you cry because you cannot cry because you cannot cry. You see, always keep crying and you get there. Okay, in regards to avoid offense and the story about Prabhupada setting 16 rounds, please give advice on achieving attentive, high quality japa tips and tricks. Tip on tricks. Okay, you have a machine I made. You put 2 wires here and the hand. Every time you're not attentive, go bzz, bzz. That's a trick, but I don't think it's a good trick. Okay? There is no trick for the chanting of the holy name. The only trick is your sincerity, and your desire to be sincere. Forcing yourself to be, it's just here. Hare Krishna, because we're chanting and then we think, I have groceries, I have to go there, I have to buy the book in there, I'm going to see this devotee, this prasad, you're thinking so many things. Because once you hear what you're chanting, your mind is focusing, is attentive. It's simple as that. You see? So you hear. It's just this. That is the only attention you need, that you hear what you're saying. And that's enough. Okay? This is the tip and this is the trick. I still have the machine. Okay? Okay. I love you guys so much. It's amazing. I'm so happy to be here right now. You won't believe it. Hola, Nela is already. She's all angry at me again. No problem. I got it. It's because I like all of you too much. Okay, so you have to forgive me. All right. So with your blessings, I take my leave now. Okay. Thank you so much. I want to say one thing. We need Yes. your blessing. So please give blessings to all of us so we can be continued in this devotional service. Okay. Krishna Matirastu. All of you, Yeah. please. Krishna Matirastu. May Krishna, help your desires, help your, prosperity in devotional service, help your heart become pure and chanting, good. And we'll keep coming this class, keep listening to your chanting, and that would be a great blessing. So I thank you so much. There's one more thing here. Okay, everyone. Okay. Oh, there's a new one. Okay. It's Soraj, I think that. Thank you. Okay. With your permission, I will leave. Thank you so much. Today I was very happy. Made my day. Haribol. Thank you, Prabhu. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।